So this is the question number 5 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which one is the correct Python statement to read and display the first 10 characters of a text file notes.txt. तो आपको एक टेक्स्ट फाइल गिवन है notes.txt, इसे क्या करना है, आपको 10 कैरेक्टर्स रीड करने हैं. नाउ आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन which one give us the correct syntax or correct statements to read the data from the text file. Okay, so in order to answer this one, first of all we need to be aware what are the reading and writing operations in the text file, CSV file and the binary file. Okay, so I want you to take a note of this. आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको. Now we have three types of files in our syllabus. First one is .txt, then we have binary file which is .bin and .dat, then we have a CSV file which is .csv. फॉर टेक्स्ट फाइल वी हैव मॉड्यूल IO मॉड्यूल, जो क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है जिसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. देन फॉर बाइनरी फाइल वी हैव मॉड्यूल पिकल मॉड्यूल, इसके अंदर आपके पास दो ही फंक्शनैलिटी होती है, लोड एंड डंप. देन फॉर CSV फाइल वी नीड टू हैव CSV मॉड्यूल. ओके, नाउ वन कमिंग टू द रीडिंग फंक्शन दैट दिस मॉड्यूल प्रोवाइड. फॉर टेक्स्ट फाइल वी हैव रीड फंक्शन. बेसिकली क्या करता है आपका पर्टिकुलर n बाइट्स ऑफ डाटा अगर हमें रीड करना है टेक्स्ट फाइल से, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग रीड फंक्शन. अगर हमें एक लाइन रीड करनी है पूरी टेक्स्ट फाइल से तो फॉर दैट वी विल यूज रीड लाइन. अगर हमें मल्टीपल लाइंस रीड करनी है एक बार में तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग रीड लाइन. सिमिलरली राइट फंक्शन किस चीज के लिए, आपको टू राइट n बाइट्स ऑफ डाटा इन ए टेक्स्ट फाइल. सिमिलरली राइट लाइंस किसके लिए, कि आपको मल्टीपल लाइंस एक साथ लिखनी है टेक्स्ट फाइल के अंदर. नाउ पिकल मॉड्यूल के अंदर अगर आपको डाटा रीड करना है फॉर दैट वी हैव लोड, अगर डाटा राइट करना है तो फॉर वी हैव डब. सिमिलरली इन CSV अगर हमें डाटा रीड करना है तो फॉर दैट वी हैव रीडर फंक्शन. अगर हमें डाटा राइट करना है तो वी हैव राइटर फंक्शन. इनसाइड दैट राइटर फंक्शन वी हैव टू अनदर मेथड्स व्हिच इज राइट रो एंड राइट रोज. फॉर सिंगल रो वी नीड टू हैव राइट रो एंड फॉर मल्टीपल रोज वी यूज राइट रोज. Okay, I hope you got the idea regarding the reading and writing function present in the different types of file. Now coming back to the question, let's see the option by option and then we'll try to figure out which one is the correct Python statement. Okay, in the option, if you see all the four options, each of them for opening the file in a same manner. Okay, since आपको क्या गिवन है, ओनली टेक्स्ट फाइल का नाम गिवन है. सिंस नो एक्सेस मोड इज गिवन हेयर तो फाइल क्या हो रही है, बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन हो रही है. सो देयर इज अ नो प्रॉब्लम विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सारे ऑप्शन ही क्या है, सही है. क्यों, क्योंकि वी आर ओपनिंग फाइल notes.txt इन द रीड मोड. नाउ इन द फर्स्ट ऑप्शन इट इज यूजिंग लोड मेथड विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, बिकॉज टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है हमारे पास, रीड लाइन एंड रीड लाइन. तो लोड फंक्शन किसके लिए यूज होता है आपका, बाइनरी फाइल्स के लिए. सिमिलरली डंप किसके लिए यूज होता है आपका, बाइनरी फाइल्स में डाटा राइट करने के लिए. हेंस ऑप्शन ए और बी क्या हो गए आपके, इनकरेक्ट. दिस वन इज द करेक्ट वन बिकॉज वी वांट टू रीड द 10 बाइट्स ऑफ डाटा और यू कैन से 10 कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट फाइल. दिस वन इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज ट्राइंग टू राइट data into the text file. Okay, so for this question option number C is the correct. Now based on the data or based on the slides that we have provided in the previous one, you need to answer this practice question in the comment box. Take a note of this question and write down the answer in the comment box, which one will be the correct answer, and you need to also give the reason why it is the correct answer. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this question, feel free to ask in the comment box. Okay then, thank you for your time.